everyone, welcome once again to this channel, and today we will learn about the last part of computer aided design application. So today we will come at the sixth part of computer aided design, and before discussing about it, like last time in the last video, what we have discussed about the major career option in landscape gardening through computer aided design, and we have learned that there are so many areas that are really good for career objective, okay, especially business karne mein and all, right? To make a business out of horticulture, to make a business out of floriculture and landscaping, especially floriculture and landscaping, okay, by using computer aided design. So we have learned that how you can make a state park design, how it even help in the wildlife also, like helping the endangered species, and then even growing nursery, right? And even making this one university campus, school campus, this one hospital campus and all, right? And even like how you can be an assistant to the like while serving with the archaeologists, okay, जो archaeologists है उनके साथ जब आप assist करोगे, so even you can help even the archaeologists also in archaeology department also, right? And not only that, but even with the civil engineer, okay, you can be a consultant. आप consultant बन सकते हो, civil engineer के साथ भी काम कर सकते हो. You can be their consultants in like while they will be constructing or they will be making this one plans in the landscape and all, right? So these are some of the like the important thing that we have discussed, कि जो मेजर career option है, objective है, जो हम लोगों ने पिछली बार discuss किया था. अब आते हैं like next slide पे, वो है जो major current uses है. So we'll discuss today about it. So now we will discuss about the major current uses of computer aided design. So before we discuss, I just want to like say something that is in the previous videos, okay, about computer aided design. I think this is this topic is a very vast topic or vast subject, but this you will learn more when you do it practically. So we will try to do it practically, or if there is some of you who have laptop also, you can practice it, okay? And if you want to learn more, then you can check more YouTube details, and then you can go through all that, and then you can do on your own, and you can learn if you have really interest in like being a landscape designer, to practice landscape architect and landscape designing and all. So you can practice on your own, like especially when you learn by your own, when you have the softwares and all, and plus if you have the laptop or if you have PC, so you can use, okay? So we have learned many things about computer aided design, right? We have learned about its this one, like what software like needed, because see, the things required should be there, because without the software or the hardware, बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर के ये मतलब संभव ही नहीं है कि आप इस कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन को प्रैक्टिस करें या फिर लाइक परफॉर्म करें. एंड ऑल्सो you need the software and the hardware, the things that are required. and even हम लोग जानते हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या है, और मतलब ड्राइंग एरर कैसे करेक्ट हो सकते हैं, राइट? लाइक इन ऑल जो पूरे मतलब ऑलमोस्ट आई थिंक 4 to 5 वीडियोस हम कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन में डिस्कस लाइक कर चुके हैं कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन को. सो वी हैव डिस्कस्ड लाइक इन इम्पोर्टेंस एंड ऑल, एंड हाउ मतलब इसके द्वारा आप लाइक हाउ यू कैन draw and how you can create, right? And you can send even from mails and all, right? Mails के द्वारा like design करने के बाद आप भेज सकते हो, you can do all that. And then some even like major role of computer and information technology in landscape gardening, right? So there are so many मतलब जो advantages है इसके.
और मतलब जो बेसिक टाइप है इसका, मतलब टाइप्स ऑफ कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन सिस्टम ऑल्सो हम लोगों ने सीखा था, राइट, द 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल, राइट. एंड देन या इवन इन दिस ऑल्सो देयर इज एडवांटेज. मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है, बट आई जस्ट वांट टू से, सो प्लीज़ लिसन नाइसली, दैट देयर आर ऑल्सो डिफरेंस. ओके, डिफरेंस भी है 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल ड्राइंग में भी, ठीक है. एंड they provide no perspective or realism for the object or character to be drawn. Okay, 2D जो 2 डायमेंशनल है उसमें जब आप लाइक 2 डायमेंशनल ड्राइंग करते हो, सो उसमें मतलब जो ऑब्जेक्ट है या फिर कैरेक्टर्स है, जैसे फीचर्स हुआ, जैसे कि बिल्डिंग्स हुआ, तो वो ज़्यादा रियलिस्टिक नहीं दिखता है. सो लाइक यू वोंट लाइक it will when you do this two dimensional, it might create many errors. जब आप कंस्ट्रक्ट करते हो मतलब रियलिटी में, फिर शायद एरर हो सकता है या फिर ना मतलब उसमें कुछ गलती भी हो सकता है, राइट. सो the object and character are drawn without any shadowing or shading. I hope you know shadowing and shading, right? So like to bring more what I'll say a solid diagram, right? So you use this option आता है like shadowing and shading, but इसमें जो 2D है like it's not there, so it won't provide that much मतलब satisfaction नहीं मिलेगा आपको जब आप 2D या 2 डायमेंशनल यूज़ करते हो. But 3D, okay, from that name only you understand that what type of dimensional it will show, what type of drawing it will show, कौन सा मतलब drawing का जो मतलब types है कैसे दिखाएगा, like how it will look. It have a very depth and realistic, okay, it make the object or the drawing, जो आपका drawing है उसको बहुत realistic दिखाता है. जैसे there are so many games, right? Especially like not only the boys but even the girls also, they play games. So जो games है phone में या फिर computer में, there are like in the games that you suppose example है जो बहुत like आजकल बच्चे खेल रहे हैं like PUBG. So even in the PUBG also like it look very real, like the house, the gardens and all, like जहाँ पर जो stone है like ना even the stones and all, like it look a bit realistic. So that is a 3 dimensional, okay, 3 dimensional drawing. और उसके बाद मतलब उसको animation में convert करके, right, by using this one computer aided design and all, like AutoCAD and all, like all those softwares, by using all that, फिर वो और मतलब realistic दिखता है, right. So by using what, this 3 dimensional drawing, okay. And then many 3D drawing are computer generated rather than hand drawing, okay. So mainly वो मतलब they are mainly computer generated, okay. computer में ज़्यादा करते हो, like you can do it. If you do it in drawing, then I don't think it will come 100%. So these are some of the importance of 3D comparing to 2D, okay, 3 dimensional compared to 2 dimensional. And even in terms of identifying errors also, errors and flaws in prototype, right. So 3 dimensional computer aided design can simulate the matching and mating of product model to test for a proper fit, okay. So इसमें ना जो 3D है आपको और मतलब अच्छा आइडिया मिलता है कि like how much you should do, how much you should create. और इसमें like you know like you can even estimate also, you can estimate that how much you need, right, how much you need, or like you can have this one आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपको कितने अगर buildings बनाना है. So if you need bricks for that, so how much bricks you should invest in that, right, how much money you should invest to buy bricks and all, right. So you'll have the idea. And then the difference between 2D and 3D animation is the appearance of depth. The same way like इसमें मतलब 2D में shadowing या shading नहीं like option है, like you won't get that option, but in 3 dimensional animation you will get shadowing and shading, okay. And then there are more
Okay, so we will discuss more about it like in the others like this one other topic or other slides. But now we'll come to the this one major current uses of computer aided design. So um, firstly is the assets such as drains, power, meters, etc. can be valid. Okay, so जो drains है, जो powers है, जो meters है, okay, it can be valid. And then the area and distances can be determined for planning and maintenance. This is one major uses. Okay, this is also one major uses of computer aided design, that the area and distances it can be determined. Okay, वो डिटरमिन हो सकता है फॉर प्लानिंग एंड मेंटेनेंस. ओके, प्लानिंग एंड मेंटेनेंस एंड द एग्जैक्ट लोकेशन, जो आपका एग्जैक्ट लोकेशंस है, लोकेशंस ऑफ ऑल आइटम्स कैन बी रिकॉर्डेड फॉर फ्यूचर रेफरेंस. ओके, सो when you do the designing in a computer aided design, okay, in this like software and hardware, okay, so जो एग्जैक्ट लोकेशन है पूरे लाइक आइटम्स का, ओके, वॉट एवर आइटम्स यू हैव पुट लाइक फीचर्स और एनीथिंग, ओके, वो जो रिकॉर्ड है वो लाइक यू कैन यूज़ इट इवन फॉर द फ्यूचर रेफरेंस, लाइक रिफ़र कर सकते हो. ओके, जो आपका पुराना मॉडल है या फिर पुराना मतलब प्लानिंग है जो आपने ऑलरेडी प्लान कर चुके हो, ओके, बाय यूजिंग कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, तो वो यू कैन लाइक वो आप फ्यूचर में भी यूज़ कर सकते हो. लाइक इन द फ्यूचर इफ़ यू हैव एनी प्रोजेक्ट वर्क या फिर कोई भी प्रोजेक्ट है या फिर लैंडस्केप डिज़ाइन करना है कुछ कहाँ पर, लाइक गोल्फ कोर्स डिज़ाइन करना है या फिर पार्क डिज़ाइन करना है, तो आपका जो पुराना मॉडल है या पुराना जो लाइक विच यू हैव ऑलरेडी प्रैक्टिस बिफोर, जो आपने ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हो बिफोर, सो आप उसको ही यूज़ कर सकते हो बाद में भी. ओके, जैसे उसमें कुछ एडिटिंग कर सकते हो. प्रीवियसली आई थिंक वी हैव डिस्कस अबाउट दैट, लाइक कैसे जो आप ऑलरेडी प्लान कर चुके हो या फिर आपको अगर प्रोजेक्ट दिया जाए तो उस सेम प्रोजेक्ट को आप फ्यूचर में भी कर सकते हो. यू कैन यूज़ इट लाइक यू आर डूइंग नाउ प्रोजेक्ट ऑन अ पार्क, लाइक क्रिएटिंग अ पार्क बनाने के लिए. सो उसमें कैसे लैंडस्केप होना चाहिए, कौन से प्लान्स, कौन से ट्रीज अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेटिक एंड एनवायरमेंटल कंडीशन एंड ऑल. सो बाद में फिर उसी को मतलब यूज़ कर सकते हो. यू कैन यूज़ दैट ओनली, लाइक सपोज लेटर आपको कोई और प्रोजेक्ट मिलता है मतलब फ्रॉम अनदर प्लेस एंड दैट ऑल्सो क्रिएटिंग पार्क्स ओनली, सो यू कैन यूज़ दैट सेम ओनली, बट थोड़ा बस एडिशन करिए उसमें. सो एंड देन नेक्स्ट इज this one, contour plans can be illustrated for drainage work. So you can illustrate, आप illustrate कर सकते हो जो contour plan है by using computer aided design. आप illustrate कर सकते हो ड्रेनेज वर्क को कि कैसे इसको कंस्ट्रक्ट करना है, जो ड्रेनेज सिस्टम है या ड्रेनेज ना एरिया होगा उसमें. सो हाउ मच यू नीड, ओके, सो यू कैन प्लान इट, यू कैन illustrate कर सकते हो by using computer aided design. And next is the earthwork of cut and fill can be made, like जैसे कि आप building बना रहे हो, so obviously you will like dig out all the soil, right, to place the foundation place करने के लिए आपको खुदाई करना पड़ेगा, right. So earthwork, like when you will cut and when you fill, suppose there is a mountain there, like suppose अगर उसमें मतलब छोटा सा mountain है, so उसको मतलब plain बनाने के लिए obviously you have to remove it. तो remove करने के लिए you need some machines and all, so उसको भी estimate कर सकते हो by using computer aided design. Okay, like कितना निकालना है, like how much you have to cut, and that same जो soil है उसको मतलब where you can use it, right, you can fill it in other places, right. So कोई कुछ भी waste नहीं होगा and you can use it. Okay, and next is cost for what, for soil volumes can be calculated. Okay, so जो soil का जो volume है, okay, calculate कर सकते हो, जो उसका cost है कितना cost होगा, राइट, उसका जो लाइक आपका जो सॉइल वॉल्यूम है उसको कैलकुलेट कर सकते हो, राइट, फॉर रेंज ऑफ वेरिएबल्स, ओके, फ्रॉम डिफरेंट सप्लायर जो सप्लाई करते हैं,
राइट, जो सप्लाई करते हैं सॉइल को, एंड ऑल्सो एस्टिमेट कर सकते हो बाय यूजिंग कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, एंड अकॉर्डिंगली आप जो सप्लायर है आप उसको बोल सकते हो कि इतना से इतना, लाइक यू विल नीड दिस मच, right, how much you need, right, and how much soil, how much amount of soil you need, how much volume of soil you need, right, and even different grades of raw product. So even like the small the bricks and all, like how much you need, and also accordingly you can calculate the cost. Okay, you can calculate the cost seeing the area and everything by using the computer aided design. Okay, and this one last, not last but next is this one. 3D models are created to illustrate the concept and to show interaction of light, shade, plant growth, future development. So like I already said before, the difference, जो difference है 3-dimensional और 2-dimensional में, ये एक common difference है कि 2-dimensional में shading या shadowing नहीं होता. So like you won't have a clear concept, आपको ज़्यादा clear concept नहीं मिलेगा when you use just 2-dimensional. Okay, लेकिन जब आप 2-dimensional model use करते हो, so you can illustrate, you can know कि अगर मैं इतना एरिया यूज़ करता हूँ तो उसमें मतलब सनलाइट आएगा कि नहीं. ओके, यू विल गेट प्रॉपर सनलाइट और नॉट. ओके, एंड इवन दिस वन जो शेड है, शेड प्लान ग्रो शेड है, लाइक वेयर यू हैव टू पुट द शेड प्लान, राइट, जो ट्रीज़ है कहाँ पर ग्रो करना है. सो लाइक यू विल हैव द आइडिया, right, you will have a proper idea, because when you create a tree then you can even create like the shadow, like जो उसका shade है, right, so how much it will cover the area then. अगर आप plan करते हो tree को वहाँ पर, so वो कितना मतलब how much like area को cover कर सकता है, right, like उसके जो like the trees, okay, like how much it will grow and how much it will create shade, so you can have an idea about it. And then even जो plant growth है, right, how much it will grow and all, and even for future development. So this is one very important point in computer aided design, that when you use this one 3-dimensional model, कि how much it is very profitable, कितना profitable है, और इसमें मतलब ज़्यादा error भी नहीं होता है when you use a 3-dimensional. Okay. And last but not the least is about computer aided design plan can be entered into software. Okay, so it can be this is actually the second last. Computer aided design plan can be entered into software that automatically operate, okay, automatically operate earth moving machine that can level the site as specific on the plans. Okay, so this is one important point of computer aided design. Okay, important point or important major current use. Okay, that you can enter into software that automatically operate earth moving machine that can level the site as level कर सकता है site को. Okay, as specific on the plan, जो आपने plan किया है, planning किया है. Okay. And lastly is information can be transferred by email. This one we already have discussed before also. इसको I think advantages में हम लोगों ने discuss किया है कि आप जो information है वो transfer कर सकते हो mail के द्वारा. Okay, so this is also one very major like current use of computer aided design.